ऐसा खौफनाक मंजर जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक फैमिली वेकेशन के लिए मोटेल में जाते हैं। रूम में एंटर होते ही एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। हस्बैंड तुरंत कॉल करता है और मैनेजर से बात करता है, ये रूम बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, हमें एक और रूम चाहिए। लेकिन मोटेल फुली बुक्ड होता है, कोई एक्स्ट्रा रूम अवेलेबल ही नहीं होता। मैनेजर सिर्फ इतना कर पाता है कि एक मेड को रूम क्लीन करने भेज देता है। जब फैमिली लंच के लिए बाहर निकल जाती है, उन्हें होप होती है कि वापस आने तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, पर जब वो लौट के आते हैं स्मेल वैसा का वैसा ही रहता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही डिस्गस्टिंग। फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड अगेन कॉल करता है, लेकिन मैनेजर बोलता है कि अब वो कुछ और नहीं कर सकता। उस रात फैमिली कोशिश करती है कि स्मेल को इग्नोर कर दे, ब्लैंकेट से नाक ढककर सो जाती है, पर सुबह तक स्मेल और ज्यादा बढ़ चुका होता है, इतना अनबेरेबल कि रहना मुश्किल हो जाए। अब हस्बैंड का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद सोर्स ढूंढेगा। पूरी फैमिली मिलकर रूम को उठापटाक करने लगती है, हर कॉर्नर, हर वेंट, हर छुपने की जगह चेक करते हैं। जब वो मैट्रेस उठाते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। बेड फ्रेम के बेस में एक गैप, एक डीप डार्क होल। डर के साथ वो पास जाकर देखते हैं और तब उनकी सांसें रुक जाती है। बेड फ्रेम के अंदर एक औरत का रॉटिंग, डिकम्पोजिंग बॉडी पड़ा होता है। स्किन का कलर डार्क हो चुका होता है, बॉडी ब्लोटेड, और उसकी लाइफलेस आईज अंधेरे में घुर रही होती है। फैमिली शॉक में पीछे गिर पड़ती है। उन्हें तब रियलाइज होता है कि वो पूरी रात सिर्फ कुछ इंचेस दूर एक कॉर्प्स के पास सो रहे थे। This woman was trapped in an elevator for 1 month. In 2016, in the Chinese city of Xi'an, an elevator maintenance worker returned to a residential building after a month-long break for the Lunar New Year. It was supposed to be a routine check, but what he found inside the sealed elevator was something out of a nightmare. The stench hit him first. When he pried open the doors, he froze. Inside was the decomposing body of a 43-year-old woman named Miss Wu, who had been trapped there for over a month. A malfunction had caused the elevator to shut down between floors. Maintenance staff had shut off the power without checking if anyone was inside. They assumed it was empty, but Miss Wu was in there, alone, screaming for help no one would hear. Claw marks lined the walls. Her fingers were mangled and bloody, evidence of desperate, agonizing attempts to pry her way out. With no food, no water, and no way to contact the outside world, she slowly starved to death in pitch-black isolation. Authorities called it a tragic case of gross negligence. Others called it something worse, a slow-motion horror story that should have never have happened. This woman died and then woke up at her own funeral. 76-year-old Bella Montoya had been declared dead after collapsing from what doctors believed was a stroke. Her body was placed in a coffin and brought home for the wake, a traditional, somber affair filled with whispering prayers, weeping relatives, and the overwhelming scent of flowers. But then they heard it, knocking, from inside the coffin. At first, the family thought they were imagining it. Then gasps filled the room as the casket visibly trembled. When they opened the lid, what they found defied logic and shattered their grief. Bella was alive. Gasping for breath, her skin pale and drenched in sweat, she blinked against the blinding daylight. 5 hours she had spent entombed, trapped in that box, barely able to move. Her fingernails bloody from scratching at the inside. She had been declared dead by trained medical professionals, but she wasn't. Family members screamed, some fainted, others cried tears of joy. Bella was rushed back to the hospital, this time with a pulse, a breath, and a terrifying story to tell. But the miracle was short-lived. Just 7 days later, Bella suffered a second fatal stroke. This time there was no mistake, no knocking, no return. She was buried again in the same coffin.